Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the topic of plasma membrane. So let's move to the whiteboard. So dear students, plasma membrane. In the previous lecture, we have discussed its structure. Dear students, आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी बात जो समझाता चलूँ. Sometimes it creates some confusion between the students. Plasma membrane, or it is also called as, इसके थोड़े synonyms भी बताता चलूँ. It's also called as the cell membrane. Sometimes it is called as cell membrane, or it is also called as differentially permeable membrane, or it is also called as selectively permeable membrane. So all these are the synonyms. तो थोड़ा सा यहाँ पर confusion बाज़ वक़्त create हो जाता है between plasma membrane and cell membrane. So dear students, there is a clear-cut difference between them. If we are talking about the outermost boundary of the cell, if we are talking about the outermost boundary of the cell, it is called as the plasma membrane. While if we talk about the inner membranes of the cell, including the cell organelles, that is termed as the cell membranes. Clear? यानी कि जो organelles के गिर्द membranes हैं, उनको हम कहते हैं in general, all these are cell membranes. लेकिन if we are specially talking about the outermost boundary or outer covering or the covering of the cytoplasm, that is the plasma membrane. While if you are talking about the inner membranes, means around the organelles like mitochondria, it is double membrane bounded. Like chloroplast, it is also double membrane bounded. Like the nucleus, it is double membrane bounded. Like the ribosomes, it is not bounded by any membrane. So we will discuss, inshallah, in the further lectures. And someone like vacuoles, like lysosomes, like peroxisomes, like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. So all these are single membrane bounded organelles. So dear students, किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसका यही मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जहन में रखना, और जो हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में भी और इससे प्रीवियसली जो इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, यू हैव टू राइट इट. और स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दैट इज समथिंग एल्स. So dear students, in the previous lecture, we discussed in detail the structure. Now we will discuss its functions. Functions of plasma membrane. So the major functions of plasma membrane are, number one, that is, it provides support and protection the first function. So this is mostly applicable to the animal cells here, as in animal cells plasma membrane is the outermost boundary
it supports the structure of the cell as well as offers protection in various ways. Clear? चूंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो प्रोटेक्ट भी कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है जो अंदर के कंटेंट्स हैं. क्लियर? Number 2, one of the major functions, that is it acts as a barrier between internal environment and the external environment. So barrier कहते हैं रुकावट को. So dear students, the reason is like if this is the plasma membrane surrounding the cell and here is nucleus over here. So the material or the environment present inside the cell is called its internal environment. While the outside material, this one, that is the external environment. And here is the plasma membrane. So it is a barrier between external and internal environment. Internal environment students याद रखिएगा हमेशा जो सेल के अंदर का environment है उसके अंदर organelles, उसके अंदर उसके organic और inorganic जितने भी chemical compounds है, everything inside this the cytoplasm, that is called as the internal environment, while outside this membrane is called as the external environment. तो ये external और internal environment किस तरह से बनता है? Because of this plasma membrane. So it acts as a barrier. So as it acts as a barrier, so it allows only selective substances to pass through it. The plasma membrane allow only selective substances to pass through it so that's why it is called differentially permeable membrane. Clear? So that is its second role. So it acts a barrier. तो सारी चीज़ें ना अंदर आ सकती हैं ना सारी चीज़ें बाहर जा सकती हैं. सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें जो सेल को चाहिए वो सेल के अंदर आएंगी और जो सेल को नहीं चाहिए they are transported out of the cell through this membrane. Clear? And number 3 is it helps in nervous coordination.
So how does it helps in nervous coordination? So the nervous coordination in the nervous system is brought about by the neurons, which are the structural as well as functional unit of the nervous system. So the neurons are able to conduct impulses, or which we called as messages, across the plasma membrane. So in second year, chapter number 17, उसमें आप detail पढ़ेंगे nervous coordination में. So just for the sake of convenience over here, so this is a neuron, a typical motor neuron. Clear? So if we look closely in this section, so it looks like this. This is a plasma membrane, both of these. Of the neuron, and they are usually charged membranes. Clear? How they are charged? The outside being positive charged and the inside being negatively charged. Clear? So that is the only ability of the neurons cell membrane. Clear? So they have got charges across them, which is called as membrane potential or resting membrane potential. Mein, during at rest, outside is, this is outside and this is inside. तो रेस्टिंग कंडीशन में आउटसाइड जो होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, यानी कि बाहर वाली साइड ये पॉजिटिवली चार्ज रहती है और अंदर वाली साइड नेगेटिवली चार्ज रहती है. जैसे कोई नर्व इम्पल्स आती है, सो आपने ग्रेड 10 में नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. दैट इज़ द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन. तो जैसे जैसे यहाँ पर वो वेव आती जाएगी, वो मैसेज आता जाएगा, तो ये चार्जेस जो होते हैं वो अपोजिट होते चलते हैं, अंदर पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर नेगेटिव. सो ऑल दीज डिटेल्स, डोंट वरी, that will be discussed in the second year, chapter number 17, and the topic of nerve impulse. Clear? So this is how the plasma membrane of neuron, especially, it is involved in this nervous coordination between the various parts of the body. And number 4, the most important function of the plasma membrane is transport. That is transport. सो चूँकि ये मुसलसल लाइक अ सीव, ये इस तरह से, जैसे आप छन्नी देखिए, आपने सीव देखी है, तो जब आप उसको ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो उसके ऊपर आटा डाल के, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो छान बूरा होता है वो ऊपर आ जाता है. ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं. सो आप इस तरह से मूव करते हैं उसको, तो तभी इनमें से ये ट्रांसपोर्ट अलाउ होती है. एग्जैक्टली इन दैट वेरी फैशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग मूविंग लाइक दिस एंड दिस, सो अलाउइंग द ट्रांसपोर्ट, allowing the, just like the sieve, so it is allowing the transport of the materials across it, okay, outside to inside and inside to outside. So dear students, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में होगी. इसको हम 2-3 तरीके से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर द लिपिड
soluble substances. अगर हम बात करें लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की, मीन्स हमने पढ़ा था जो चीजें इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर मस्ट बी समथिंग अलाइक. सो एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर. वो लिपिड बायलेयर है, ठीक है. सो लिपिड बायलेयर में जो लिपिड्स मौजूद हैं, क्योंकि आउटसाइड दे आर लिपिड्स, सो दैट इज व्हाई लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं इसमें से. क्लियर? सो the lipid soluble substances can easily pass through the plasma membrane because they are alike. बहुत आसानी के साथ. Clear? But as far as the neutral particles are concerned, number 2 are the neutral particles or neutral substances. तो neutral substance कहेंगे किस पे? Which are on a net, they are carrying no charge. Clear? On net, क्योंकि number of electrons और number of protons इनमें equal होता है, तो इसलिए उनके ऊपर net कोई charge नहीं होता. So that is why they are called as neutral substances. So the neutral substances like carbon dioxide, like oxygen, like the amino acids, or like the glucose, or like the water, they also pass through the plasma membrane easily. तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, शायद आगे चल के जहन में ना रहे, मतलब भूल ना जाऊँ, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है itself, it is a charged membrane. It is charged. इसके ऊपर चार्ज होता है और आम तौर पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इट इज नेगेटिव चार्ज यूजुअली, एक्सेप्ट फॉर द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स. वो आउटसाइड उनकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, लेकिन आम तौर पर बाकी तमाम जितने सेल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. क्लियर? तो चूंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के ऊपर वाटर या इस तरह के जो जितने भी हैं, तो ये आसानी से ये भी डिफ्यूज कर जाएंगे. बट हियर देयर इज समथिंग considerable, that is the water being polar faces some difficulty while passing through the hydrophobic region of lipid bilayer. तो हमने लिपिड बायलर की बात की थी, उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो ऊपर जो हेड है ये तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ये जो टेल वाला पोर्शन है जिसमें के आमतौर पर वो फैटी एसिड चेन्स होती हैं, so that is hydrophobic, as we have discussed in the previous lecture. So that is hydrophobic. तो जो वाटर तो यहाँ से मूव करेगा, वो कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से. लेकिन जब वो यहाँ से तो आसानी से एंटर हो गया, लेकिन जब वो हाइड्रोफोबिक रीजन से गुजरेगा तो उसको थोड़ी सी दुश्वारी होगी, यहाँ पर उसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है. एंड नंबर 3,
are the charged particles. Here means the ions. Charged particles, the oppositely charged. Charged particles will pass easily, while the alike charges, alike means the negatively charges or anions, will face difficulty. Clear? और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है. सो दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट में एक तो हमने यहाँ पे सब्सटेंसेस की बात करी कि किस किस तरह का जो सब्सटेंस है वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं. क्लियर? और इसी तरह से कुछ जो वेस्ट होते हैं वो मुसलसल एंटर हो रहे होते हैं इनसाइड द सेल, तो उनको भी वो पैसिवली मूव कर रहे होते हैं. उनको अंदर एंटर होते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है. लेकिन ट्रांसपोर्ट के एतबार से हम बात करें तो उसकी दो मेजर टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड active transport. Clear? Passive transport, dear students, as you know, it involves no energy expenditure. यहाँ पर कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको पैसिव कह रहे हैं. जबकि इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी as ATP, in the form of ATP. So as far as passive transport is concerned, there are two types of passive transports. Number one is diffusion, and number two is osmosis. Clear? So diffusion, it is the movement of solute molecules from high concentration to low concentration. Clear? और फिर डिफ्यूजन फर्दर दो टाइप्स किया डियर स्टूडेंट्स. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू सिंपल डिफ्यूजन और facilitated diffusion. और डियर स्टूडेंट्स सिंपल डिफ्यूजन तो होगी across the lipid bilayer, जो आसानी से मूव कर जाएंगे, यानी कि मोटिव यही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. बट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन चैनल्स. तो फैसिलिटेट किया जा रहा है मूवमेंट के लिए बड़े पार्टिकल्स को, ताकि वो आसानी से यहाँ से गुजर सकें. और ऑस्मोसिस दैट इज ओनली फॉर द वाटर, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. और जहाँ तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात है, इट इज द मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन to high concentration by using ATP, or this is also called as uphill movement. जैसा भी हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी पहाड़ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो तब हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है. सीढ़ियाँ उतरते हुए इतनी एनर्जी हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही होती. सो दैट इज वाई लो टू हाई, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव
ट्रांसपोर्ट और अपहिल मूवमेंट। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें और जहन में रखिएगा, वो मज़ीद आगे चलकर डिस्कस करेंगे। दैट इज endocytosis and exocytosis in the next lecture. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।